before I move ahead, the yesterday, yes, yesterday we were describing that if there are few nonlinear equations, yesterday or day before yesterday, we were describing if there are few nonlinear equations and those equations are like this. Say if those equations, if those equations are like this is nonlinear equation. Suppose there are 2 or 3 equations, then how to solve this? Then if you remember, we told that this P2, C3, C4 are the given non-values, and this F0, they are the values of the function after putting the estimated value. The values which are not given means after assuming what is the value of x2, x3, x4, and put these x2, x3, x4 into the f, then you will get this value. So they should be same if the value assumed are estimated are the same. Means if the real, whatever is the correct value, if you estimate, then this will be 0. Then error will be 0. Otherwise the actual value is non-value is this, calculated value is this. This error when multiplied with the Jacobian inverse, you will get the error. This error is error, you can say the correction in the result is added into the previous estimated value and it is going on repeated. And this is called the Jacobian matrix, which is obtained by difference partial derivative with respect to all the variables. Now, based on this, here you see, based on this, we have taken one numerical question here. Let understand that use the Newton-Raphson method to find the intersection of the curve. There are two, x1 square plus x2 square equal to 4. It is the equation of the curve or whatever it may be if it is equation. And second equation is the e to the power x1 plus x2. So this is the x1 square, x2 square. This is nonlinear equation. It is e to the power x1. So it is again a nonlinear equation. This is equation of the curve. So this let just for picturizing. Otherwise, it is not required what type of equation it is. It may be any equation, but we know the curve is like this circle. This equation, this x1 x2, x1 square plus x2 square is equal to 4. So this is the equation where radius is 2. Anyway, radius is 2 and center is this. So this is one equation. Another equation, this is e to the power x. So e to the power x means it is a exponential equation. This exponential equation is like this. So if you solve these two equations, we expect we can find the value of x1, x2, which will nothing with what it will be the intersection of the two equations. Means this equation and this equation intersection means this. We will get this x1, x2 here this value as well as this value here. X1 and x2 we will obtain. So now to solve this, now how to solve this? First of all, we will do it by manually. Then we will see the program for this. So first of all, what we know, we know that we have to estimate some value. Means we will estimate some value of x1, x2. Means we will assume some value of x1, x2, which is maybe in any, if it is in the range of this, then result will obtain better. If otherwise, result will take time to converge. So and later on we will find the Jacobian. And what is the Jacobian? Jacobian matrix is the derivative of this. This is the function f. This is the value of c1 and c2. This is f1, f2. So derivative of this f1, derivative of this. So with respect to x1, if you do derivative of this with respect to x1, this will be 2x1. Is it clear or not? And derivative of this with respect to x1 is this, and derivative of this with respect to x1 is 0. So derivative of this is here. Then derivative of this with respect to x2 will be 2x2. Then derivative of this e to the power x with respect to x1, e to the power x means e to the power x1. And with respect to x2 it will be 0. Then derivative of this with respect to x2 will be 1. So is this clear or not? In this case, we can easily find the derivatives because here it is not multiple terms are there, neither multiple terms are there, nor sine or cos are involved. So we can easily obtain this. Is it clear or not? Yes, sir.
Now, so we obtained the x1. We are solving this through a manual method. So we obtained this value, Jacobian. Okay, and what is the C1 and C2? C1 and C2 is known. You see here, C1 is 4 and C2 is 1. Okay, and estimated value means we assumed some value of f1 and f2. Let here let us estimate x1 is equal to 0.5 and x2 is equal to 1. हमने ये मान लिया x1 0.5 होगा. We can assume anything. बस only thing is rough idea लगा के चलेंगे तो iteration will be less. So we assumed the x1 or we estimated the value here, this x1 and this x2. x1 is 0.5, f2 is equal to this. So putting this x1 and x2 into the f1, this is f1, it is f2. Putting it here, we will obtain f1 and f2. So we will obtain f1 0 because the estimated value means initial estimation. So it is called f1 0, f2 0. ये जो भी वैल्यू निकल के आई वो आपने यहाँ रखा. C1 C2 is known, 4 and 1. The जो इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू रखने के बाद आया जो f1 f2. Now इसके अंदर भी you know this also. We know ये आपने कैलकुलेट किया था. So this equation ये आपने जो वैल्यू कैलकुलेट किया था ना here, ये जो कैलकुलेट किया था इसमें x1 x2 रखेंगे. Then so if you put the value of x1 x2, you will get this Jacobian matrix. Jacobian inverse multiplied by 4 and 1 is C1 C2 और वैल्यू उसमें f1 0 f2 0 means आप वैल्यू ऑफ f1 f2 आफ्टर पुटिंग द एस्टिमेटेड वैल्यू ये f1 f2 आ गया. So this inverse of Jacobian multiplied by this, you will get the correction. So simply if you multiply this, you will get delta x1 delta x2. Now this delta x1 x2, this is the initial first iteration. Now this x1 x2, if it is added in the previous estimated value, we will get the new value of x1 and x2. x1 पहले जो भी था आपने 0.5 एज्यूम किया था, अब ये करेक्शन आया तो 1 प्लस दिस इज इक्वल टू दिस आ गया. सिमिलरली x2 की वैल्यू पहले आपने क्या एज्यूम किया था, -1 एज्यूम किया था, प्लस ये करेक्शन आ गया. So adding this correction, you will get new value of x1 and x2 after first iteration. You will get this. अब ये estimated value को लेके दोबारा repeat करेंगे and it will go on. But even in the first iteration, we know this is the result. Now, how to do it with the help of the computer program? So for this, first of all, we will write the computer program. That if you understand to solve this through the computer program, then it will be easy to understand the write a computer program for solving the power flow equations, which are much more complicated and number of equations are again much more than this. That's why we have taken this simple example. Now let us understand this computer program. Now it is saying iteration, we assume because we have to perform number of iteration, so let in the beginning iteration is equal to 0. Now x means input, initial estimation means जो आपने x is the matrix which consists of x1 and x2 means two value. So if it is saying, you see this is within bracket, this to this, it means it is saying enter initial estimated in this form x1 x2 मीन्स एक मैट्रिक्स के फॉर्म में आप x1 x2 जो एस्टिमेट किया आपने, सपोज करिए 0.5 एंड -1, तो जैसे ही आप करेंगे रुक जाएगा, आप पुट करेंगे फर्स्ट वैल्यू 0.5 एंड -1, ये मान लेगा पहले इसने x1 0 x2 0 की वैल्यू आपने गिवन कर दी. ओके, or it is a difference, this any change, this let us assume it is 1 1 1 1 and 1, we will see it where it is required. C1 C2 it is given 4 and 1 equation के अंदर given है. Okay, now it is saying display iteration DC Jacobian matrix dx and this. ये देखिए इसका मतलब क्या है, ये विदिन डिस्प्ले मतलब ये विदिन ब्रैकेट है, विदिन कॉमा, then it is inverted comma. So it is the same will be printed as it is when you write display this will be printed from here to here. जो inverted comma से inverted comma है ये इसमें print हो जाएगा आपके as it is means iteration DC ये as it is print हो जाएगा जैसा यहाँ से लेके यहाँ तक है. Now you see this is the program only from here to while to end. This is a computer program. You see here. Now see what is this here while. इनिशियली देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ dx की वैल्यू आपने 1 1 लिया, तो व्हेन दिस dx dx एक्चुअली लेटर ऑन यू विल सी इट इज ए डिफरेंस बिटवीन द c एंड f. c तो f1 f2 c की वैल्यू गिवन था 4 and 1 और f की वैल्यू
जो भी आपकी लेटर ऑन कैलकुलेट होकर आएगी. सो इट इज ए dx मीन डिफरेंस ऑफ द टू, c माइनस f1 f2. बट इनिशियली आपने dx की वैल्यू 1 1 ले लिया है. सो इफ इट इज ग्रेटर देन 0.001, इससे अगर बड़ा है तो ये करता चला जाएगा, ये बार बार इट विल रिपीट व्हाइल लूप. तो नॉर्मली स्टार्टिंग में तो 1 लिया है तो ये अंदर इसमें एंटर करेगा, फिर हर बार ये चेक करेगा, क्योंकि dx की वैल्यू हर इटरेशन में कम होती जाएगी. कम मीन्स c माइनस f हर इटरेशन में कम होती जाएगी. तो आइदर दिस और इट इज सेइंग एंड व्हाइल maximum either this condition or this condition, and means this double end means end ITR is less than. अगर इटरेशन 10 से कम है तो रुक जाए. इनिशियल इटरेशन 1 है तो बोथ द कंडीशन सेटिस्फाइड एंड इट गो इनसाइड, इट विल गो इनसाइड. क्योंकि ये क्यों लिखा है, सपोज आपने कोई एब्सर्ट मिस्टेक कर दी और इटरेशन इट इज कंटिन्यूअसली 2, इट इज नॉट कमिंग आउट, ये बार बार इटरेशन बढ़ता चला जा रहा है, इट इज नॉट कमिंग आउट. Then after 10 it will come out, because 10 iteration is very much more. The result is expected to come between the 3 4 5 iterations. So even if it is not coming after 10, it means there is some mistake and it should not go to the infinite loop. That's why this condition has also been added. Now iteration is 0. When it will enter into this, it will count iteration is equal to iteration 1. Now you see f was the equation, ये equation थी x1 square plus x2 square. This जो आपका f इक्वेशन था f1, this was the f1, this was the f2. f is again a column matrix having the two elements. First element is this and second element is this. Means इक्वेशन में जो f1 था x1 square plus x2 square, ये क्या है e to the power x1 plus x2. Okay. Now इसकी वैल्यू since you have given the value of, ये आपने x1 x2 की वैल्यू गिवन है, तो जैसे ही आप लिखेंगे ये कैलकुलेट कर लेगा. मींस f1 के अंदर ये वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी. नाउ इट विल डिफरेंशिएट c माइनस f. इसमें c की वैल्यू 4 और 1 था मैट्रिक्स में, और इसकी वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होकर आएगी. ये डिफरेंस आ गया, तो ये डिफरेंस आ गया. नाउ वी कैलकुलेट द जैकोबियन अपने x1 x2 जो आपने जैकोबियन भी आपने कैलकुलेट किया हुआ है. सेम आपने देखी ये जैकोबियन मैट्रिक्स है यहाँ से लेके यहाँ तक. दिस इज 2x2 मैट्रिक्स जो अभी आपने मैनुअली कैलकुलेट किया था वो आपने यहाँ लिखा. तो इसकी x1 x2 की वैल्यू ऑलरेडी जो आपने एस्टिमेट की है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस ये जैकोबियन की वैल्यू आ जाएगी. इनवर्स ऑफ जैकोबियन विल बी कैलकुलेटेड हियर मल्टीप्लाइड विद डिफरेंस. ओके, सो इट इज द करेक्शन इन द x1 x2 variable, correction in the variable. This is added into estimated value. So new iteration will come. Means first iterated value will come here and it will print. अब ये f print मतलब ये देखिए परसेंटेज g iteration and this. तो ये परसेंटेज ऑफ g iteration मतलब ये इस फॉर्म में, पहले तो इटरेशन कौन सा नंबर का इटरेशन चल रहा है, ये फर्स्ट चल रहा है तो पहले 1 लिखेगा, क्योंकि यहाँ 1 आ चुका है ना 1, तो ये 1 लिख देगा. फिर डिस्प्ले के अंदर ये डीसी मतलब ये जो यहाँ एरर आया ये कैलकुलेट किया था, ये वैल्यू यहाँ लिखेगा. फिर जे जैकोबियन यहाँ 2/2 का कैलकुलेट हुआ ये लिखेगा. फिर दोनों का डिफरेंस क्या था ये dx लिखेगा. फिर x1 x2 की वैल्यू क्या थी यहाँ पे जो ये नया कैलकुलेट होगा ये वो लिख देगा. ये फर्स्ट इटरेशन. लेकिन यहाँ साथ में ये अब ये कंपैरिजन कर रहा है, यहाँ पहुंचेगा और देखेगा कि एरर x1 ये डिफरेंस जो है ना c माइनस f, इसकी वैल्यू ये dx है ना c माइनस f, इसकी वैल्यू 0.001 से अगर कम, मींस एरर इतना कम है कि 0.001 से किसी भी कम हो गया है, उसके बराबर हो गया, उससे भी कम हो गया, तब ये बाहर आ जाएगा और ये प्रिंट कर देगा रिजल्ट इज एंड. अदरवाइज ये नेक्स्ट उसमें जाएगा इटरेशन इज इक्वल टू इटरेशन प्लस 1, 2 सेकंड टाइम करेगा, थर्ड टाइम करेगा, बार बार ये रो ऐसे लिखता जाएगा. सो इन दिस वे यू विल फाइंड द आउटपुट विल बी लाइक दिस. देखिए पहले देखो इसने क्या लिखा, एंटर इनिशियल एस्टिमेट. जैसे ये आएगा इस फॉर्म में तो आप ये लिखेंगे, ये आपको एंटर करेंगे तो ये एज्यूम कर लेगा x1 ये है और x2 आपका ये है, इसको पता लग जाएगा आपने जो वैल्यू गिवन है. फर्स्ट इटरेशन में दोनों का डिफरेंस ये c माइनस f, ये 2/1 की मैट्रिक्स है, ये आ गया. फिर ये जैकोबियन मैट्रिक्स आ गया. ओके, जैकोबियन मैट्रिक्स आ गया. फिर ये डिफरेंस आ गया c माइनस f. ओके, सॉरी वो आ गया करेक्शन ये आ गया, करेक्शन इन द वैल्यू, और इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया फर्स्ट इटरेटेड वैल्यू x1 x2 की वैल्यू ये आ गई. यही अब आपका देखिए मैनुअल में, इफ यू रीड दिस 1.3 और माइनस 1.97, ये देखिए मैनुअली जब सॉल्व किया था तो इतना ही वैल्यू आ रहा था. देखिए
1.3 minus 1.97. ओके, तो ये अभी फर्स्ट इटरेशन की वैल्यू आ गई एंड यू गो ऑन रिपीटिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ की बार बार जब करते जाएंगे तो ऐसे ये प्रिंट होता जाएगा 1 2 3 4 फिफ्थ जब आपका 5 इटरेशन हो गया नाउ यू सी आफ्टर 5 इटरेशन ये वैल्यू 1 और माइनस 1.7 आ गया x1 x2। अब देखिए ये जो एरर है अगर एक्चुअल वैल्यू 1 है तो ये इट इज लेस देन द एक्चुअल, तो नियरली इट इज इक्वल टू द करेक्ट, ये करेक्ट वैल्यू आ गई x1 x2। इसमें एरर 0.0001 से भी कम है, देन इट विल स्टॉप द प्रोग्राम। तो ये हमारा ऐसा रिजल्ट आ गया। दिस इज अबाउट द Newton-Raphson method for any non-linear equation. This is about the Newton-Raphson method for non-linear equation. So I hope you will do this. I will upload this also, and this will be considered as a next experiment, assignment of experiment number 5, and this you can do and manually as well as through the program. Once you understand this, then you can also understand the program for Newton-Raphson method for power flow equations. You can understand it for power flow equation. And you see, for the power flow equation we explained, if you remember, if you remember this, we described the power flow equation. This was about the power flow, how to solve the power flow equations, and we know that such type of matrix called the Jacobian matrix comes in the power flow. This is a Jacobian matrix. This is the correction in the error delta 2 delta 3, and these are the voltages which we have to obtain. These are the PQ buses, and this value is given. P and P are given all. Q is given from the only for PQ buses. So these are the value known. These are calculated after putting the value estimated and the given value. And this also we explained. Means we have obtained the formula for each of this. इसका formula आपने देखा. There are 8 formulas. On the basis of this, we will calculate this Jacobian after putting all the values of given and known value. Then this inverse will be multiplied here, and finally we go on the number of iterations by applying the while loop. We will get this, but there will be some difference in this analysis and the normal Newton-Raphson method for nonlinear equations, because in power flow analysis we know in the generator side there is some restriction, there are some conditions. That what are the conditions? That there are some PV bus, where those PV bus are those bus which maintain the constant voltage, and the voltage are maintained constant because of they are able to supply the reactive power, but each generator cannot supply the reactive power whatever is demanded. Reactive power can be supplied within the limit of within its capacity. So if it is not there, if the reactive power is okay, if it is not there, then so some of you are left. What is this? So anyway, if the generator are not able to supply the reactive power as demanded because of their limitation, then that bus cannot be act as a PV bus, and that convert into PQ bus. Then some acceleration factor in the voltage is also considered. So keeping all those things in mind, some change in the computer program is done, and computer program will be somewhat different than the previous one. And that was the particular program for 2x2 bus system. But here it should be the general program that any number of buses can be there. So it is slightly complicated program. That's why a flow chart has been written here. You see the flow chart. Whether I don't know whether recording has been started or not. Started, sir. Okay. Started, sir. Okay. So now you see what it is doing. Now what is it saying? Start means first of all read all the data. All the data means data for the load flow, whatever is the data means bus data and line data.
जो सभी में जो गॉस सीटल में था, सेम डाटा विल बी कैन बी यूज्ड और need to be used either type of load flow analysis is there. So bus data and load data it will read and it will form the bus बनाने का आपको कंप्यूटर प्रोग्राम पता है, it will form the bus. Now then whatever is not given, whatever is given, that is that you have read here, and whatever is not given, that is estimated or that is assumed here. First of all, slack bus data, voltage and angle is assumed, and then other than the slack bus means if PV bus is there, then delta PV bus is there, then we have to calculate Q and delta, so delta is assumed, and if it is PQ bus, then voltage and delta both are assumed on also they are estimated here. Here set iteration count, set bus count means you have to perform the number of iteration. तो आपने पहले iteration 0 कर दिया. You will have to perform, you will check whether all the iteration has been taken place, or means whether condition has been satisfied or not. So and it will continuously to do iterations till death condition. And for all, this is to be done for all buses, not only for bus number 1, 2, 3. For all buses, all the calculation is done. So now this, after doing this, it will check is it is slack bus. Well, first it will take one bus number 1, first of bus set bus count I is equal to 1. Bus number 1 lega, 2 lega, 3 lega, or it will do. For each bus, it will do such type of loop analysis. Loop, it will perform in loop that if it is slack bus, अगर slack, so if it is slack bus, then it will calculate current and later on it will use for the while calculating the Q, P and Q. Now it will see each mode if it is a PV bus or PQ bus. Slack bus के बाद क्या होगा? Slack bus है तो some calculation will be done and later on if it is a PV or PQ. उसके बाद में अगर slack bus नहीं है then it will do whether it is a slack bus तो होगा ही होगा. If slack bus है तो ये perform करेगा, नहीं तो next आगे बढ़ जाएगा. And otherwise also it will go, even if it is not slack bus, it will go to the next. That's why this condition is not applied here. It will be either PV bus or PQ bus. If it is a PV bus, so if it is PV bus means, देखिए आपने, if you remember C and F, C was given and F was calculated. तो C और F was the same. Otherwise जो F था, F ही तो C था. So similarly, if P is given, we will calculate the P. यानी P and B is given, तो P and B कैलकुलेट करेंगे. मतलब क्या, P और B की नॉन वैल्यू तो पता है, बट आफ्टर पुटिंग द एस्टिमेटेड वैल्यू जो हमने ये एज्यूम किया उसको लेके P और B की मींस फॉर्मूला से P और B की वैल्यू क्या आ रही है वो कैलकुलेट करेंगे. सिमिलरली अगर PQ बस है तो जो वैल्यू हमारी एस्टिमेट किया है और फॉर्मूला में रखेंगे तो P और Q की वैल्यू क्या है ये कैलकुलेट करेंगे. मींस दो तरह के P और Q हो गए, एक तो गिवन वैल्यू जो ऑलरेडी आपने यहाँ किया हुआ, दूसरा कैलकुलेटेड वैल्यू, तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया. ठीक है. और फर्दर देखिए, अगर वो पीबी है, इफ इट इज पीबी बस और हमने पी और बी कैलकुलेट की है, फिर इसमें देखेंगे कि उसका जो क्यू, देखिए यहाँ पीवी बस था, पीवी कैलकुलेट कर लिया, पीक्यू बस था, पी और क्यू कैलकुलेट कर लिया. एंड देन वील कंपेयर द वेदर क्यू इज विद इन लिमिट और नॉट. उस बस के लिए दिस क्यू अगर विद इन रेंज है, इफ इट इज क्यू इज विद इन रेंज, then okay. If it is not in range, suppose जो Q की वैल्यू कैलकुलेट आई है एंड यू सी Q की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट होकर आ रही है, इफ इट इज लेस देन मैक्सिमम देन ओके इफ और ओके एंड इट विल गो, देन इट विल सी वेदर इट इज मिनिमम में भी है तो भी देन इट इज ओके. अगर ये मिनिमम मैक्सिमम की रेंज में है तो हम क्या करेंगे, means either less than minimum, रेंज में है, then it is okay, then will come here. Otherwise if it is not in range, तो ये हमारी PV बस था, this bus will be converted to the P and Q. तो ये P और Q में कन्वर्ट हो जाएगा. You see here.
तो ये P और Q में कन्वर्ट हो जाएगा. Then it will calculate for PV बस के लिए अभी P और Q कन्वर्ट. P is already converted, here it will convert the Q. जैसे यहाँ Q convert, if it is PV बस, sorry, if it is PV बस, then it is okay. Otherwise ये लिमिट के बियॉन्ड जा रहा है, then this bus will be converted as a PQ बस. और PQ बस कन्वर्ट होगी तो उसकी Q की वैल्यू क्या होगी? अगर ये मिनिमम साइड में और मैक्सिमम, डिपेंडिंग अपॉन इफ इट इज हियर और हियर. अगर मिनिमम साइड में तो मिनिमम एज्यूम कर लेंगे, मैक्सिमम साइड में तो मैक्सिमम. तो ये PQ कन्वर्ट होगी. अदरवाइज ये PV बस था, तो हमने इसका फिर वोल्टेज, देन या PQ कन्वर्ट हो गया, P और Q कन्वर्ट हो गया, या वोल्टेज कन्वर्ट हो गया. देन इट विल सी मींस PQ बस का PQ कन्वर्ट हो गया, वोल्टेज बस का P और V कन्वर्ट हो गया. और ये कन्वर्ट हुआ था मींस ये PV बस बाद कन्वर्ट इनटू PQ, तो अगेन PQ कन्वर्ट हो गया. और इट इज डन फॉर ऑल द बसेस. It is done for all the buses. That's why you see this is rotating from here to here. It will see if it is a for all the bus, it will go on. For loop is there, and if so, that's why it is checking. If it is last bus, तो बाहर आ जाओ. Otherwise last bus नहीं है तो इसको फिर then it has done the one iteration, and it will see iteration is equal to iteration. It will go continuously. एक iteration के लिए, दो iteration के लिए ये continuously करते जाएगा. नेक्स्ट इटरेशन कि अगर देखिए ये वैल्यू B की एक्चुअल वैल्यू, so sorry, there is some so now after doing, it will determine the चेंज इन P and Q. जो आपका P और Q में जैकोबियन, यहाँ नीचे जैकोबियन कैलकुलेट किया हुआ है, ये सी. इफ दोनों डिटरमाइन द डिफरेंस, जो एक्चुअल वैल्यू थी P और Q की वैल्यू, एक्चुअल P और वोल्टेज जो P और Q की एक्चुअल वैल्यू थी, और जो एस्टिमेट होकर आई थी उनका डिफरेंस यहाँ लिया, dx जो था यहाँ डिफरेंस लिया. देन इट विल सी वेदर द डिफरेंस इज विद इन लिमिट, देन नो प्रॉब्लम. मींस वेरी लेस. इफ द डिफरेंस इज वेरी लेस ऑन 0.0001, then it will stop. If difference is not there, it will then only it will calculate, it will do the Jacobian matrix, inverse of Jacobian, and inverse of Jacobian will be multiplied. This is the inverse of Jacobian, and this will be multiplied plus multiplied with this error जो हमारा ये आया था error. So then the new value will come, and it will see iteration is equal to iteration plus 1, and finally it will stop. It will continuously to do for iteration 1, iteration 2, iteration 3, it will continuously to do, and finally when this difference is very less, it will stop. After printing the value of the calculation, जो हमारी जो वैल्यू निकालना था उसको प्रिंट करके ये स्टॉप हो जाएगा. So this is the flow chart for the Newton-Raphson method. So I hope if you do the first of all the program for the normal equation, then you will do the one numerical question for the power flow equation. Then if you understand this computer program, if you see this flow chart and you will understand the computer program of this, I think you can understand the computer program for the decoupled computer program for the Newton-Raphson method. So with this intention, now I would like to explain one numerical question, because you are supposed to perform at least one or two numerical question on each. Either it is a Gauss-Seidel method or Newton-Raphson method, at least you have to do one. Since Newton-Raphson method is very complicated, very big method, that's why we would like to select first of all very small network, that is only 2-3 bus system network, and only one or two iteration manually. Only one or two iteration we can perform manually, otherwise it is very difficult to perform. So you see here, this is a one numerical question. This is a one numerical question. Here it is saying, do this numerical question. I have given this numerical question to you also for Gauss-Seidel method. Now the same question, this question I have given you in the assignment, that this question you have to solve through Newton-Raphson method also. Gauss-Seidel method, I think you have solved it manually.
Nitin has submitted also. This problem was solved by Gauss-Seidel method manually as well as through the computer program. Now same problem we will solve with the help of the Newton-Raphson method. Here you see there is some correction here. This is not joint. This is a transmission line between 1 and 2. This is transmission line between 1 and 3 bus, and this is transmission line between the 2 and 3 bus. This is P and Q is given. This third bus is the PV bus. This is given. Now, so what we can do? Here you see, this is a slack bus. What is to be calculated? Here P and Q is given. P and Q is given. So what is calculated here? Here delta is calculated. Here P and Q is given. So P2, and here what is given? Here P3 is given. So we know P2, P3, and Q3 is given. P2, P3 and Q3. So this Jacobian matrix will be of 3 by 3. यहाँ 3 by 3 होगा P2, P3 and Q3. Jacobian matrix will be 3 by 3. और इधर क्या कैलकुलेट क्या करना है? डेल्टा 2, डेल्टा 3 and डेल्टा 2, डेल्टा 3 and V2. Delta 3, delta 2, delta 3 and V2 is to be calculated. तो ये हमारा तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, जैसे उसमें किया था वाई बस बनाते हैं, तो वाई बस बनाएंगे. लेटर ऑन वी विल देखिए वट एवर इज गिवन. क्या गिवन है? जब ये आपको बताया P2, P3 and Q2. So we will write the equation for P2, P3 and Q2, and after putting the estimated value उसको हम कैलकुलेट करेंगे. तो इसकी जरूरत यहाँ पड़ेगी. P2, Q2 इसकी वैल्यू यहाँ इक्वेशंस में V2 तो कैलकुलेट करेंगे ही, उसके अलावा ये देखिए Q3. ये तो शायद वो आपका आ गया गॉस-सीडल. From here, Newton-Raphson method, I think the power flow solution, same problem by Newton-Raphson method. So first of all, we made the Y bus here. We calculated the value. Equations we know the equations, so we calculate P2, P3, PQ. These are the equations which we described in theory. P2, P3, we will calculate P2, P3, Q2 on the basis of whatever is given and whatever is presumed. Whatever is given and whatever is not given, that is estimated. On the basis of all those, we calculated this value. So we know P2. This is after putting the value, it will be P20, P3, Q30, Q2, and this is given also. So this is given also. Here you see, and then we will calculate the Jacobian. Jacobian का calculate कल हमने जो आपको 8 formula बताए थे, these 8 formulas are there. So putting those values, we will calculate this Jacobian also. तो ये Jacobian calculate कर लिया. ये दोनों का डिफरेंस गिवन एंड कैलकुलेटेड आ गया. इसका इनवर्स इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एंगल आएगा दिस. तो एक अब मैनुअली आप करेंगे, देन वी विल गेट दिस. ओके, इन प्लेस ऑफ 2, इफ देयर आर 3 इक्वेशन इन द प्रीवियस वन विदाउट एनी कंडीशन, दिस विल वर्क आल्सो. वो जो आपका प्रोग्राम था, उसी प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज करेंगे. 2 की जगह 3 इक्वेशन कर देंगे एंड मैट्रिक्स विल बी 3 by 3. देन नो प्रॉब्लम, यू कैन गेट दिस डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4. But that will not be the generalized program. That will be for specific for this problem. इस problem के लिए program होगा वो. But later on we can write the generalized program as we did in the Gauss-Seidel method also. तो इसके बाद इसको ऐड किया, मीन्स whatever is calculate होगा है ना, करेक्शन को एस्टिमेटेड वैल्यू में ऐड किया तो हमारा न्यू वैल्यू, ये करेक्शन आ गया. इसको ऐड करने के बाद करेक्शन को ऐड करके इसमें ऐड किया तो न्यू वैल्यू आ गई डेल्टा 2, डेल्टा 3. Then we go on repeating this. In this way, we are able to solve the numerical questions or any power flow. This is the power flow power system. So we can make the power flow analysis for any power system network using the Newton-Raphson method. And we know why the Newton-Raphson method is so important. Okay. So, okay. गुप्ता जी 5-7 मिनट बाद कर लूँ मैं. ये क्लास खत्म होने वाला है मेरा, या कर लेना आप मुझे 5-7 मिनट बाद कर लेना, 10 मिनट बाद हैं, फोन पे कर लेना. अभी मैं बैंक जाने वाला हूँ.
अच्छा, नहीं तो फिर बैंक में आ जाऊंगा मैं, अभी बैंक में पहुंचूंगा थोड़ी देर में। हाँ, 10 मिनट बाद में क्लास ओवर करके ना, बैंक का काम है उधर जाऊंगा, तो वहीं पे मिल मिल जाऊंगा फिर। हैं? बस नहीं, अब बस 5-7 मिनट का बचा है। ठीक है, हाँ ठीक। हाँ, मैं 3 बजे बैंक में मिलूंगा, वहां से फिर बात वहीं कर लूंगा बात। नहीं, पौने 4, हाँ पौने 4, 4 बजे, 4 बजे। ठीक ठीक। हेलो, आर यू लिसनिंग मी? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So now, yes, we were describing this, and in this way you can perform the powerful analysis for Newton-Raphson method. If you have any question, please ask, either in the numerical or in the flowchart or in the computer program for the small system, 2x2 system. If you have any question, we can go